तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं हनुमान जी को, जिनकी इमेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी और इमेज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और आयरन मैन अभी पेंटिंग में ही डला है, क्योंकि अभी 22 जनवरी तक तो मैं रामचंद्र जी की ही ड्राइंग करूँगा, हनुमान जी की। और मैंने ये लोगो भी बनाया था। अगर आपको भी अपने लोगो बनवाना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने औजार उठाएंगे और उनको साफ करेंगे। तो हमारे सिर्फ आउटलाइन में 3 ही औजार रहते हैं, मैकेनिकल पेंसिल और स्केल और इरेजर, अगर इरेज करना पड़े तो ही। सबसे पहले हम पॉइंट लगा लेंगे बिल्कुल ही लाइटली मेथड से। दोनों तरफ पॉइंट लग चुके हैं। अब हम लाइन खींचेंगे बिल्कुल ही लाइटली, क्योंकि हमें बाद में इरेज भी करनी पड़ती है। लाइनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें आउटलाइन आई से शुरू करूंगा मैं, और आई से 7 और 3 के बीच में। 3 ऊपर है और 7 और 8 के बीच में आई से। और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए। Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through. Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? तो हमारी हाफ आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम हेयर्स और बियर्ड में थोड़ी सी स्ट्रोक दे देंगे और बाकी सभी आउटलाइन में डार्कनेस कर लेंगे, क्योंकि हमें बाद में इसको इरेज करना पड़ेगा। और कमेंट में ज़रूर बताना हम इसको कौन से कलर से ड्रॉ करें। हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। on.